Assalamualaikum. So today's topic is basically development of nervous system and introduction. Okay, it's just going to be an introduction. So we're going to link it with the knowledge of our journal embryology. We all know from the knowledge of journal embryology that what happens is after the formation of embryonic disc, there is this primitive node, then there is this primitive streak, and then there is a certain portion that becomes thickened on the surface of the embryonic disc, and it is going to be called as our neural plate, right? Now if we take a section at this level, ye sara ka sara portion is basically neural plate. If we take a section at this level, it is going to look like somewhat like this. Okay, this is basically the surface ectoderm. This is the entire ectoderm. There is this portion which is surface ectoderm, then there is some thickened portion which is going to form our neural plate. This is the neuroectoderm. This is going to form our neural plate, and then there is surface ectoderm, right? The next step is the folding of the neural plate. At this point there is no fold, so it is going to be called as our neural plate. Now what happens is there is going to be folding. Two folds will appear at its lateral ends, and it is going to start folding, and at this stage, this point is called as the neural fold, which these neural folds are going to come close to each other, and in between this groove is formed, which is called as the neural groove. This point of the neural fold, where the surface ectoderm and the neural plate are at the junction, this is the point which is going to give rise to our neural crest cells, right? It is going to give rise to what? Our neural crest cells. These neural crest cells obviously are not going to stay at this point. They are going to migrate, and they are going to undergo an epithelial to mesenchymal transformation. दिस इज यहाँ पे ये जो पोर्शन था, दिस इज ऑन द एक्टोडर्म, और इसके नीचे साथ मीजोडर्म बनता है. एम्ब्रियोनिक डिस्क में वी स्टडी दैट ड्यूरिंग गैस्ट्रोलेशन 3 layers are formed. The upper layer is ectoderm, then there is mesoderm, and then there is endoderm. Yeah, obviously it is not as simple because of a number of processes that are going inside it. Take care. Then what happens? It undergoes epithelial to mesenchymal transformation, and these neural crest cells are going to migrate. After that, the neural folds are going to approach each other, and the neural tube is finally going to close. Now, we need to know कि ये जो neural tube close होती है, यहाँ पे we know that neural tube is a long, बिल्कुल यहाँ पे ये सारे एरिया में एक न्यूरल ट्यूब बन चुकी हुई है. लेकिन इस ये न्यूरल फोल्ड्स थे, साइड पे न्यूरल फोल्ड्स अपीयर हुए थे आफ्टर देयर एलिवेशन. We want to know that the way at what point the closure actually started. So it actually started in the cervical region. ठीक है, यहाँ पे सिंगल पॉइंट पे सबसे पहले ये फोल्ड्स मीट करते हैं. दिस इज़ द cervical region. Now from the cervical region, what happens? The closure is going to extend in the cranial direction. This is the cranial direction, this is the caudal direction, and the folds are also going to extend in the caudal direction. ठीक है, तो आहिस्ता आहिस्ता ये सारी न्यूरल ट्यूब क्लोज होती जाएगी, और यहाँ पे आप देखें कि ये हमारे पास बिल्कुल क्लोज सी एक ट्यूब बन गई है, एक्सेप्ट एट 2 पॉइंट्स, एट द क्रेनियल पॉइंट एंड एट द कॉर्डल पॉइंट. जो क्रेनियल पॉइंट है, यहाँ पे द ओपनिंग इज लेफ्ट विच इज़ कॉल्ड एज क्रेनियल न्यूरोपोर, और कॉर्डल पॉइंट पे जो ओपनिंग रह जाएगी दैट इज़ कॉल्ड एज कॉर्डल न्यूरोपोर. Now obviously these pores have also have to close. So what happens is on the 25th day of the embryo, the cranial neuropore will close. At this stage, we also need to know that the somite stage will be 18 to 20 somites. तो हम डे के हिसाब से भी एम्ब्रियो की एज बताते हैं एंड सोमाइट्स के अकॉर्डिंगली बताते हैं. So this is the closure of the cranial neuropore, and after 3 days the caudal neuropore will also close, and it is going to be at the 28th day. ठीक है, अब ये बिल्कुल सारी न्यूरल ट्यूब क्लोज्ड स्ट्रक्चर एक हमारे पास बन गया. न्यूरोपोर्स क्लोज हो गई हैं. न्यूरोपोर्स जब क्लोज हो गई हैं तो हमारे पास आप ये देखोगे that what happens is that there is going to be a closed tube with a cavity. अब ये ट्यूब क्या स्ट्रक्चर्स बनाएगी, दिस वी नीड टू लर्न. सबसे पहले वी आर गोइंग टू हैव
प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स बनेंगे. प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स के अंदर दे आर गोइंग टू बी 3 प्राइमरी ब्रेन वेसिकल्स, प्रोजेंसेफेलॉन, mesencephalon and rhombencephalon. The cranial most is prosencephalon, right? Each of them is going to form a different structure. Prosencephalon is going to form our forebrain. सबसे जो cranial side है वहाँ पे आप obviously forebrain है. फिर उसके बाद mesencephalon है. Meson means mid, so it is going to form the midbrain. And then we have the rhombencephalon. These are the 3 vesicles or 3 dilatations, right? Rhombencephalon is going to form our hindbrain. And then there is a spinal cord. ठीक है, 3 vesicles तो हमारे पास प्रोजेंसेफेलॉन, mesencephalon और rhombencephalon बनी. नीचे there is no dilatation. This portion is going to form our spinal cord. Another thing to remember is there are several flexures. This embryo is बिल्कुल not straight neural tube. There are going to be certain turns. There are 2 types of turns or flexures within an embryo. Number 1, there is going to be a flexure within the mesencephalon, and that flexure is the cephalic flexure. mesencephalon के अंदर एक flexure आता है, एक turn आता है, that is cephalic flexure. और एक flexure होता है at the level of the junction of rhombencephalon and spinal cord, that is going to be our cervical flexure. Now if we take the diagram here, you can see कि ये फोर ब्रेन में डेवलप होगा पोर्शन, ये मिड ब्रेन में और ये हाइंड ब्रेन में. नीचे देयर विल बी स्पाइनल कॉर्ड. वी स्टडी 2 फ्लेक्चर्स. नंबर 1, इन द मिड ब्रेन देयर इज अ फ्लेक्चर. ठीक है, एक टर्न आपको ये नज़र आ रहा है, दिस इज द सेफेलिक फ्लेक्चर. फिर उसके बाद हमने कहा दूसरा हाइंड ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के जंक्शन के ऊपर एक टर्न आता है, एंड दिस इज गोइंग टू बी कॉल्ड एज आवर सर्वाइकल फ्लेक्चर. So now at the 5th week, what happens is these primary brain vesicles are further going to form secondary brain vesicles. ये primary brain vesicles बने थे, अब secondary brain vesicles बनेंगे. जो secondary brain vesicles हैं उसमें जो हमारा prosencephalon है, that is going to form telencephalon and then diencephalon. These are formed by our prosencephalon. ठीक है, ये सारा प्रोजेंसेफेलॉन से बनना. The mesencephalon will stay as such as mesencephalon. There is no change in that, no further vesicle formation. And our metencephalon, जो rhombencephalon था, that is going to form 2 vesicles again. One of them is the metencephalon and the other is the myelencephalon. अब ये हमें पता चल गया कि यहाँ पे 1, 2, 3, 4 and 5 secondary vesicles बन रहे हैं in the 5th week. ठीक है, so 5 and 5. In the 5th week, 5 further vesicles are forming. 2 are formed from the prosencephalon, mesencephalon remains as such, and 2 are being formed from the rhombencephalon. Now we'll see कि in vesicle से क्या structures बन रहे हैं. The telencephalon will give rise to our cerebral hemispheres. अगर आप वैसे भी देखें तो हम लोग जब ब्रेन की बात करते हैं तो ब्रेन में क्या होता है कि सबसे ऊपर हाईएस्ट जो सेंटर्स हैं वो क्या चीज़ है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ठीक है, सेरिब्रल हेमिस्फीयर के अंदर ही वी हैव अ पोर्शन विच इज़ द थैलेमस एंड द हाइपोथैलेमस. दिस इज़ द डायनसेफेलॉन. ठीक है, ये टीलेंसेफेलॉन का पोर्शन आ गया. उसके बाद नीचे आप देखते हो कि हमारे पास नेक्स्ट क्या चीज़ आती है, मिड ब्रेन. फिर हम लोग पढ़ते हैं कि देयर इज़ द पॉन्स, साथ ही यहाँ पे सेरिबेलम होता है. ठीक है, सेरिबेलम भी प्रेजेंट होता है. एंड देन देयर इज़ नीचे देयर इज़ मेड्यूला. तो इसी तरह यहाँ पे हम लोगों ने देखना है. टीलेंसेफेलॉन विल गिव राइज टू दीज सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स. डायनसेफेलॉन इज गोइंग टू फॉर्म दीज स्ट्रक्चर्स विद इन साइड द सेरिब्रल हेमिस्फीयर. ग्रे मैटर के मैसेज पढ़ते हैं ना, थैलेमस, हाइपोथैलेमस, epithalamus, pituitary gland and the optic vesicle are all formed from the diencephalon. Then mesencephalon, we all know, is going to form the midbrain. Metencephalon is going to give rise to the next structure which is the pons and the cerebellum. And the myelencephalon is going to give rise to the medulla. ठीक है,
Now, what about the cavities? We know from this knowledge of neuroanatomy that the cavity of telencephalon is lateral ventricle. So telencephalon की भी cavity lateral ventricle होगी. डायनसेफलॉन जहाँ पे होता है वो दो वहाँ पे जो कैविटी होती है दैट इज़ थर्ड वेंट्रिकल. सो हेयर इज़ गोइंग टू बी द थर्ड वेंट्रिकल. मेसेंसेफलॉन की कैविटी वी नो दैट इज़ सेरिब्रल एक्विडक्ट. वहाँ पे कैविटी क्या होती है, नैरो हो जाती है, सेरिब्रल एक्विडक्ट. पॉन्स और सेरिबेलम जहाँ पे होते हैं यहाँ पे यू नो दैट देयर इज़ दिस वेंट्रिकल दैट इज़ कॉल्ड एज द फोर्थ वेंट्रिकल. तो यहाँ पे फोर्थ वेंट्रिकल होगी. और फिर उसके बाद मेडुला के माइलेंसेफलॉन की भी फोर्थ वेंट्रिकल कैविटी होगी. अच्छा, आपको पता है कि यहाँ पे क्या कम्युनिकेशंस क्या होती हैं. यहाँ पे आपने पढ़ लिया लैटरल वेंट्रिकल्स हैं. लैटरल वेंट्रिकल्स आर कम्युनिकेटिंग विद द थर्ड वेंट्रिकल थ्रू इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मॉनरो. यहाँ पे इंटरवेंट्रिकुलर फोरामेन ऑफ मॉनरो होगा. फिर उसके बाद ये जो है वो नैरो हो जाएगी. दिस इज़ गोइंग टू बी कॉल्ड एज द सेरिब्रल एक्वेडक्ट. ठीक है. एंड फिर इसके बाद जो है नीचे फोर्थ वेंट्रिकल होता है और फोर्थ वेंट्रिकल mesencephalon और myelencephalon की कैविटी होती है. राइट. सो दीज आर द basically the general structure of our nervous system development.